Okay, guys, we'll start. It's already 16:05. I think we have less people today. Do you guys have any questions? Guys, can you hear me? Can you see my screen? Yes, you can see the screen. Okay. Let's wait for a minute or so because networking topic I have been telling you guys थोड़ा सा important topic है. I do not want anyone to miss that. Otherwise आगे काफी चीजें नहीं समझ में आएगी. Or do you guys have any questions or any doubt, or do you want me to repeat any of the topics which we have already covered? Maybe we could do that. Yes, Irfan, you can ask. What is it? As far as it is related to Azure, we could cover the question, even if it is not related to networking. Irfan? हाँ भाई भेज रहा हूँ एक सेकंड. Okay. Yes, guys. So I was asking, do you guys have any questions or any doubt? Do you want me to repeat any topic? So we could skip networking's part for today because I see very less people are joining today. Or if you guys do not have any issues, we can continue with it. And those who are missing, they can watch the video, or maybe they can do it by themselves. Show the PowerShell and share one script to create a resource group. Yes, we could do that. Three more minutes, guys. We are waiting. Let's see कोई और join कर रहा है क्या? If not, we'll start. Meanwhile, Irfan has a request or a question that he wants to see. He wants to see how to create a resource group using PowerShell. So PowerShell is, I hope you all know that what is a PowerShell. As of now, we have been discussing that, right? Anyone who has questions on PowerShell, that what is PowerShell, why do we use it? Or let me ask a question that how many modes are there to connect to Azure account? How many methods are there through which I can use or I can control my Azure account? Through command line and GUI. Yes, command line and GUI, right? Two broader ways. When I say GUI, that is your portal. Command line will have bash, command line will have CLI, command line will have PowerShell. So let me show you one thing, how to create it using PowerShell. Irfan has asked that question. So this is using portal. And to use PowerShell, there are two methods. One is I can use my local machine's PowerShell. This is what it is. For this, I will have to log in first. Anyone remembers the command to log in to my AZ account? Yes, guys. Anyone? We did that. If you remember, we tried. I did explain it to you guys how to log in. There's a small command. AZ login. AZ login. All right, AZ login. That's the one. So I can either do AZ login here and log into my subscription from here. That I could do. Or what is the next way? Other PowerShell, from where will I get the next PowerShell or the other option of PowerShell to control my account? What is that? From the portal itself. From the portal. Where is it? Where is it on the portal? Can anyone navigate me or guide me? On the top bar. Next to search. Exactly. Here it is.
So the moment I typed here on this one, I type AZ login and I hit enter. So this is what I got. I'll have to come here and log in. And that's all. It logged in because my username and password was already saved. If I didn't have that, वो username और password पूछता, आप लोगों को ये करना था. And that's all. Then you could close this. इसको आप close कर सकते थे. And this is how it looks. And now I'm logged in. Now you could see that I'm logged in with my AZ account. इसके बाद जो भी command मैं यहाँ पर run करूँगा, that will be applied to my account. यहाँ पर इतना सारा क्यों बता रहा है? AZ account में can you guys read and tell me that why do I see these 3 or 4 options? ये इतने सारे options क्यों दिख रहे हैं मुझको? Why do I see all these options? Why not only one option? Different subscriptions. Exactly, because I have multiple subscriptions here. We did explain and we did discuss subscriptions also. I have 3 subscriptions here, and with this ID, I have multiple subscriptions. If I show you my directory to you guys, these many subscriptions and directories I have. तो यहाँ पर ये सब appear हो रहा है. ठीक है, but now there is a setting जिसमें मैंने default कर रखा है. So whatever command I run, that will go to here. ये मेरा default directory है Tsoft Info Solution. तो मैं PowerShell पे जो भी run करूंगा वो यहाँ पर जाएगा. We could change this, but वो जब हम detail में देखेंगे तब हम इसको देखेंगे. ठीक है, so I could run a command here to create a resource group. This is one method. Another method to use PowerShell is here. I can click here and I'll see a PowerShell window here, or a command PowerShell command prompt here. And from here also I could create one. I could use the PowerShell and I could create resource group or delete resource group or do whatever I want to do. Each and everything, whatever we could do using GUI, we could achieve that using PowerShell. So I will create a resource group here using PowerShell as Irfan requested. But before that, let me quickly go back and explain resource group to you. Though we have done that, if you guys remember that diagram we had where we had a subscription, under subscription we had resource groups, if you guys remember that. नहीं भी है तो I will just explain it to you quickly. So these are the resource groups, existing resource groups which I have in my environment. Let me open MS Paint and I will explain it again. So this orange line, it is representing my subscription. I could have one subscription or I could have many subscriptions. This is under my tenant. Now what is tenant? I hope you guys know what is a tenant. A tenant is you call it Active Directory or you call it a tenant, anything. It is your space on Azure portal. Azure is a cloud, a public cloud portal. हर कोई साथ में तो काम नहीं कर सकता है, right? उसमें you will require some virtual portal on that, some virtual space. So your virtual space is called your tenant. It is called your Azure Active Directory. Under your portal you will have some subscriptions. जैसे मैंने Netflix का example दिया था आप लोगों को कि Netflix पे login ID तो आपने बना लिया user email से और password से. Login ID तो बना लिया. That does not mean you can start watching movies. To watch movies you will require subscription. किसी का HD हो सकता है, किसी का one device subscription हो सकता है, किसी का कोई भी subscription हो सकता है. So similarly you will require subscriptions in Azure. So these are the subscriptions. And why do we require subscriptions? For billing purpose. Most of the time ये branches में divide होता है या application based divide होता है. Example which I use, that if I am an owner and if I own Ola and Uber, दोनों किसी एक owner का है, and I want to see कि मैं कितना spend कर रहा हूँ infrastructure पे on Azure, इसके लिए मैं अलग अलग subscription बना दूंगा. So it will be easier for me for billing purposes, for accesses. तो ये तो हुआ हमारा subscription. But under subscription then we have resource groups. Now why do we have resource groups? Because एक एप्लीकेशन हो या एक कंपनी हो, बीट ओला बीट उबर, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे. इनका कोई एडमिन डिपार्टमेंट होगा, इनका एचआर डिपार्टमेंट होगा, दे विल हैव networking department, they may have some finance department, compliance, legal, vendors, किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है. and all of them will have their own resources. रेड में जो है वो रिसोर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, and then green are resources. So all of them will have their resources. तो एडमिन के रिसोर्सेज अलग हो गए, लीगल के रिसोर्सेज अलग हो गए. रिसोर्स में क्या आता है? वर्चुअल मशीन्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क शेयर फोल्डर्स,
हर तरह की चीजें whatever is there in Azure वो all will be called resources, not only in Azure, on premises पे भी जो सारी चीजें आप यूज करते हो आपका काम चलाने के लिए, those are called resources. Ignore this green color for this box. This is also a resource group. Okay, so these are resource groups. Why do we have them? To segregate them. ये एक IT का रिसोर्स ग्रुप हो सकता है जिसमें सिर्फ IT के रिसोर्सेस हो गए, एडमिन का हो सकता है जिसमें सिर्फ एडमिन के रिसोर्सेस हो गए, फाइनेंस का होगा फाइनेंस के हो गए, राइट? सो व्हाई डू वी हैव दैट? सो वी कैन गिव एक्सेसेस. अब मैं यहाँ पर किसी को एक्सेस देता हूँ सब्सक्रिप्शन लेवल पे, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस जो है सबको होगा उस, let me select another color. Yeah, if I have given access to someone on subscription level, what is a prerequisite? By the way, किसी को access देने के लिए सबसे basic requirement क्या है? We discussed this. AD यूजर होना चाहिए. Exactly, that user should present here. वो user at least इस AD में होना चाहिए. तो let's say user one यहाँ पर है, तभी मैं उसको यहाँ पर access दे पाऊंगा. Just because this user one is here, that does not mean he has access. ये दोनों डिफरेंट चीज है, ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है? एक्टिव डायरेक्टरी ये पैरेलल चल रहा है. एक यूजर यहाँ पर होना चाहिए तभी एक्सेस दे सकता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज यूजर यहाँ पर है दैट डज नॉट मीन उसको सारे एक्सेस है, बट अ यूजर शुड बी देयर. सो अ यूजर इज देयर इन एक्टिव डायरेक्टरी. ये एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बनाने वाला काम जो है, ये बहुत बेसिक सर्विस डेस्क वाला जो अज्योर सर्विस डेस्क जो होता है वो लोगों का काम है. पीपल हु आर टारगेटिंग 5 to 6 lakhs 7 lakhs तक का पैकेज, दे कैन टारगेट फॉर अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी वाला जॉब, नॉट द कंप्लीट वन, सर्विस डेस्क वाला जॉब, जहां पे आप लोगों को सिर्फ यूजर बनाना है, किसी ग्रुप में ऐड करना है, कहीं से निकालना है, पासवर्ड रीसेट करना है, बेसिक चीजें इतनी ही करनी है, दैट्स ऑल. एडमिन पीपल यू कैन लुक एट इनटू दिस. आर्किटेक्ट का ये सब कुछ कवर हो जाएगा, और उसके आगे जो टॉपिक्स मेजर टॉपिक करते होंगे हम लोग वो आर्किटेक्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है? सो देयर आर सब्सक्रिप्शंस, देयर कुड बी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस, देयर कुड बी वन सब्सक्रिप्शन. इन माय केस आई हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, सो वी आर टेकिंग मल्टीपल सब्सक्रिप्शन वाला केस, ठीक है? सो हियर इफ आई हैव गिवन सम एक्सेस ऑन दिस सब्सक्रिप्शन, सो बाय डिफॉल्ट उसको ये एक्सेस हो जाएगा, ग्रुप तक एक्सेस जाएगा, ये रिसोर्स ग्रुप तक जाएगा और ये रिसोर्सेज में भी जाएगा. तो समवन हु इज एन ओनर एट subscription, he will be owner on all resource group, not only this one, सारे resource group. इस subscription में जितने resource groups हैं और जितने resources हैं सब में access चला जाएगा. But I do not want one person to have all these accesses. मेरा IT वाला मैनेजर है, IT वाले मैनेजर को लीगल रिसोर्स ग्रुप पे क्यों मैं पूरा एक्सेस दूंगा, और मे बी लीगल वाला मैनेजर है उसको मैं फाइनेंस वाले पे क्यों एक्सेस दूंगा. So to avoid those situation, we have resource groups. So what can we do here कि हम उस particular resource group पे आकर उसको access दे सकते हैं. He will not have access to subscription, किसी भी तरह का access नहीं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अलावा कौन से और resources है और resource group है. Unless you give him access on subscription, subscription पे read only दे दो तो सब देख पाएगा. अपने resource group पे read उसको write का access दे दो, वहां का वो owner हो जाएगा. So for that is the reason we have resource groups. Now in my environment, instead of application name, मैंने आप लोगों के नाम पे इसको resource groups का बनाया है. So you could see all these resource groups, जिसको भी मैंने इसका access दे रखा है मैंने, those guys can see here, अपने अपने resource group देख सकते हैं. और जिनको दूसरे subscription का दे रखा है, there are few more subscriptions here. Let me check. There was one. Here it is. इस पे मैंने कुछ लोगों को access दिया है. So you guys can see this subscription. इस subscription का आप लोगों को सारी details दिखेगी, but you will be able to edit only on that resource group, and I can see no one has used a single penny here, and we hardly have 15 days left in this one. So from Monday we'll start creating virtual machines. Guys, please start creating, otherwise ये balance जो है ना खत्म हो जाएगा, 14,500 waste हो जाएगा, and this user will not be able to create. So if you guys see, आप में से कोई भी login करेगा, you will be able to see all this, but you will be able to edit or create or delete something only in your own resource group. किसी और इसमें ये नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ अपने आपके रिसोर्स ग्रुप में जो है आप एडिट कर सकते हो. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज अ रिसोर्स ग्रुप. एनीवन हैज एनी डाउट? भाई ये स्टोरेज माउंटेड जो हो रहा है उसका चार्ज लगता है क्या? हाँ, कोई भी स्टोरेज होगा उसका चार्ज लगेगा. ये जो अभी जो तुमने किया अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कोई भी पे स्टोरेज, द मोमेंट ठीक है. यू यूज स्टोरेज, इसका मतलब है कि आप उसके हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो अज्योर की, चाहे वो एक फ्रैक्शन ओके. भी क्यों ना, एक एमबी भी क्यों ना, बहुत नेग्लिजिबल चार्जेस है इसके. सो आई विल कीप दैट रिसोर्स ग्रुप को, मैं उस स्टोरेज को वैसे ही रखूंगा, बट यस चार्जेस आर देयर फॉर श्योर, उसमें कोई शक नहीं है.
So anyone has any doubt? वैसे तो ये पूरा रिवीजन है, रिपीटेशन है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू गाइस बिकॉज़ आज काफी लोग मुझको दिख नहीं रहे थे, सो मे बी आई विल नॉट कवर इसके नेक्स्ट सेशन, हम लेंगे भी नहीं 40 मिनट्स वाला इसके बाद का, वी विल फिनिश इट फॉर टुडे बिकॉज़ आई डू नॉट वांट पीपल टू स्किप नेटवर्किंग वाला सेशन। नेटवर्किंग नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों के वर्चुअल मशीन वगैरह कुछ नहीं समझ में आएगा। आई वाज प्लानिंग कि आज नेटवर्किंग हो जाता तो मंडे से वी कुड हैव स्टार्टेड वर्चुअल मशीन। मंडे को हम लोगों को मे बी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े, विल सी हाउ टू डू इट। बट डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप? Yes. Yes. ओके, वन मोर थिंग, दिस रिसोर्स ग्रुप या सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर जो मुझको एक्सेस देना है वो एक्सेस मैं कहां से देख सकता हूँ? व्हाट इज दैट ऑप्शन कॉल्ड? People who attended last sessions, last to last sessions, I'm expecting an answer from them. IAM. IAM, right? IAM is the option, and उस category को क्या बोलते हैं? What are the categories of accesses? एक है Azure Active Directory, which is the Azure other category we had for accesses. RBAC. RBAC. Perfect. RBAC. Rollback. Yes, Yeah. yes, guys. Resource- Perfect. resource based. What is the full form of RBAC? Resource Role based. Role based. Role Resource based, based. not- Role based access. No, Yeah. नहीं, resource है, role based access है, control. दोनों क्यों? Role है Okay. role. Role based. Role है, right? Role. Right, right. Why am I focusing on this, guys? क्योंकि आप लोगों को पता होता है, but what will happen interview में, those people will use jargon. Now you know the Correct. difference, but someone will say, okay, what are the, have you worked on RBAC? और आप लोग यार ये क्या चिड़िया का नाम है, हमने तो कभी देखा भी नहीं. Though you know the concept, but you don't know the jargon. So make sure we discuss jargons also. So these are called RBAC. ठीक है, ये जो रोल्स है जो सब्सक्रिप्शन लेवल और उसके नीचे जो डिस्कस होते हैं, these are called RBACs, role based access control. यहाँ से ये जो ऑरेंज लाइन से नीचे जितने भी होते हैं, आई हैव टोल्ड यू गाइस कि ये सब्सक्रिप्शन पे भी IAM दिखेगा, रिसोर्स ग्रुप पे भी IAM दिखेगा, एंड रिसोर्सेज पे भी IAM दिखेगा. IAM तीनों जगह कॉमन दिखेगा. ठीक है, बस हायरार्की इस तरह से फॉलो होगी. एंड अदर देन दैट देयर इज Azure एक्टिव डायरेक्टरी. तो ये दो ही तरह के हमारे पास एक्सेसेस है. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर. Now you guys know what is a resource group and everything, right? Anyone who wants me to guide how to create a resource group using GUI, let's create using GUI, and then we'll create one using PowerShell, so it will be a crystal clear example for you. ऐसा नहीं है, someone asked me, Irfan asked me to create one resource group using PowerShell. I could have simply come here, एक command copy paste करता और आप लोगों को बता देता कि यहाँ पर ये आ गया है, आपका resource group available है, but उसमें आप लोगों को कुछ समझ में आता नहीं, right? Hence I always take time. Maybe हमारे एक दो सेशंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, but that is fine with us. So is it clear, guys? Resource group, ये सब आप लोगों को समझ में आया अब तक? Yes. Okay, so now who wants access on portal? Who intends to practice from Monday or Tuesday? Because आज का सेशन I think चला गया तो Monday फिर नेटवर्किंग में चला जाए. So who intend to practice so I can create his or resource group? जिसका already नहीं है obviously वो. Few of you have access on my subscription. I think Khalid has on my one, then Sumaya has on my subscription, Vishal has on my subscription, Irfan obviously you have on my subscription, Kumail has on my subscription, Riyaz. So who doesn't have access? Henty, you already have a resource group here, I can see. So all of you have access here. Yogesh has access here. Yes, guys, anyone else who wants access, who doesn't have one? Akib bhai, yes, Akib bhai, you also have access here. Because do you want me to create? Okay, so yes, sir. yes, guys, who could guide me step by step? Let's assume that Vikas is, because I will put you on mute. So let's assume that Vikas is a new joinee to your team, and you want him to onboard from scratch. Now, what level of access he's looking for? Same level of access which Henty has. So Henty has view reader access on the subscription and owner access on his resource group. So I want you to guide me to create a resource group for Vikas, make him an owner on that resource group, make him a reader on this subscription. So what are the steps I will have to take? Who could guide me with that? You can go to Active Directory first. Active Directory. Where do you want me to log in for Active Directory? Search. Go to search and type Active Directory. Are you sure Active Directory?
विकास ये है ना, यूजर क्रिएटेड है ना नहीं ऑलरेडी, है, नहीं है, from scratch. तो It's एक्टिव first डायरेक्टरी day. में यू Guys, करेक्ट. understand one thing. We did not discuss that yet, but I have been telling you this frequently. Many times I have told you Active Directory is a different thing. There is a specific question. Azure Active Directory. Yes, there's a specific question, Active Directory and Azure Active Directory. हाँ भाई, you can search for Azure Active Directory. Yes, so do not say Active Directory. Okay भाई. Active Directory is something which we have on which we have at our on premises. Fine, जो हम लोगों ने पहले देखा था. So we deal with Azure Active Directory. Active Directory पे भी हम कर सकते हैं, but जब Azure Active Directory है तो we will not do that. We'll go for Azure Active Directory. ये एक specific question आता है अलग से, Yes. ठीक है, that what are the differences between Azure Active Directory and Active Directory. इसको हम पढ़ेंगे बाद में. But make sure you where you mean Azure Active Directory, you say Azure Active Directory and do not just replace it with simple Active Directory. So I'll search for Azure Active Directory. Yes. Where do I go now? Users. Users. New user. All right. So there are two methods. Either I can create user, I can simply type Yogesh's name here or Vikas name here or Irfan, anyone for जिसके लिए भी हम बना रहे हैं. As of now, we are creating for Vikas, right? Yes. I can do this, or I can invite a user. I will have to type Vikas's email address here, and then he will be able to do the next step. So as of now, we'll create it so we can see it. So let's say we are creating it for Vikas. Yes. Yes. What should I do next? User. Click on user. Okay. Now what? Now Vikas will global not admin. be creating. Vikas will have zero role in my Active Directory. Vikas is a solution architect, or he's an Azure admin, so he will have zero role in my Azure Active Directory. So what kind of role would you like to give him here? You can Guys, are you skip getting this. it? Other than Irfan, are you guys getting it? That what are we discussing here? Okay, so we'll just give the just user role. Yes. You don't even have to can give skip any this. role. That's okay. Even if you Yes. don't give any role, तब भी चल जाएगा. But in this चल case, I will जाएगा. give Vikas को थोड़ा सा एक role दे देता हूँ मैं, ताकि if he wants to practice थोड़ा बहुत, तो at least he should be able to see our Active Directory. ठीक है. इसलिए मैं विकास को global reader का role दे रहा हूँ. Otherwise, actual environment में आप Azure Active Directory का कोई role दो भी मत. क्यों? Because the user who is coming, he is not planning to work in this environment. Understand this? ये दो एक अलग-अलग environment है. ये जो black में पूरा जो है ये Azure Active Directory है. So someone who wants to work on subscription directly, उसका लिए बस इतना रिक्वायरमेंट जरूरी है कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करे. Azure Active Directory पे जीरो रोल हो तो भी काफी है. बट इन दिस केस आई वांट के विकास को आगे जाके थोड़ा बहुत देखने हैं, कुछ यूजर्स बनाने हैं, इसलिए आई एम गिविंग हिम ग्लोबल रीडर वाला एक्सेस, और जब कुछ ये होगा तो मैं इसको दूसरा एक्सेस भी दे दूंगा. एज ऑफ नाउ ग्लोबल रीडर का एक्सेस मैं दे रहा हूँ. पासवर्ड आई हैव कॉपीड. व्हाट इज दिस ग्रुप्स? हु कुड एक्सप्लेन दिस ग्रुप्स टू मी? These are management groups wherein the roles are predefined or the accesses are predefined in that group. So we can create a user and make him part of that particular group, management group. Anyone else who wants to add something or correct if it is, or who supports it that this is correct, or anyone else with some other Any answer? user group can be created, right? Like management group can be different and other user groups can be different. Right, exactly, Andy, you're correct. Yes, Irfan, your answer is correct. Partially थोड़ा सा गलत है उसमें. These are not called management group. These are called security groups. मैनेजमेंट ग्रुप थोड़ा सा एक अलग चीज है. मैनेजमेंट ग्रुप क्या है? आपके सब्सक्रिप्शन का जो ग्रुप्स है ना, वो एक मैनेजमेंट ग्रुप है. दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स. नाउ व्हाट आर सिक्योरिटी ग्रुप्स? के मैं एक ग्रुप बना के मैंने उस ग्रुप को सारा एक्सेस दे रखा है. जैसे इस रीड ओनली एक्सेस का एक मैंने ग्रुप बनाया. द मोमेंट आई ऐड विकास हियर, now he will have read only access, complete read only access हमारे पूरे सब्सक्रिप्शन पे. now Vikas can log in and he will be able to see पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन का ये जो देख पाएगा. one or more could not be granted. roles, and why not? We'll have to see that. दो रोल आ गए क्या यहाँ पे? Active Directory वाला रोल असाइन नहीं हुआ है for some reason. I'll have to check why not.
मे बी मैं खुद इसके ऊपर ये आई थिंक सिर्फ मैं एडमिन वाला रोल है मेरा शायद, वो आई हैव टू सी दैट, बट दैट्स ओके, दैट इज नॉट स्टॉपिंग आवर प्रैक्टिकल. Okay. When it comes to subscription role, let's go to Vikas and check what level of access he has on subscription. So either there are two methods, we can go to Vikas and check, or we can come to this subscription and we can come here. That was showing my role, and then where can I check कि किसको क्या क्या roles assign किया हुआ है? First thing, from where do we control these roles, subscription level के roles? Access control, IAM. IAM, right? Guys, see, only 14 days are pending. इसमें कल परसों हमारा छुट्टी है, मंडे को आई थिंक नेटवर्किंग में फिर चला जाएगा. So please start using this IAM. Yes. From where can I check assigned roles? I am not talking कहाँ से assign करना, assigned roles कहाँ से मैं check करूँ? Role assignment, second Role assignment, right? So here I can check किसके पास क्या क्या role है. So I can see Henty has role, Yogesh has reader access. ठीक है. So here I can add now. यहाँ से मैं add कर सकता हूँ. Yes. Reader access add करना है मुझको Reader. सिर्फ. Yes. Member. So here I'm adding Vikas. Yes. And I will also see if I can see my read only access वाला जो group, see ये group वहाँ पर added नहीं था actually. Yes. अब मैंने इस group को भी Okay. add कर दिया. अब next जो user आएगा उसको simply बस इस group में add कर दो and they will have access. Okay. Okay. So now Vikas can log in and see if he is able to see all these resource groups and everything. Yes. Obviously there is no resource group for him that we are about to create now. ठीक है. Yeah. So Vikas, I'm sharing this with you. The moment you log in, you will have to change your password. Okay, okay. इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट एक पब्लिक मैसेज में ही कर रहा हूँ, so all can see that is fine, because the moment you log in you will be able to change your password. Okay, now the task is to create a resource group. Now let's create a resource group for Vikas. So first let's create a resource group using PowerShell, using our GUI. So you can see what components do we need while creating a resource group. So when I create a resource group, I select my subscription, then I type my resource group name, then I type region. Region ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है. As of now I'm taking East US, majority services East US में है. Tags optional है, जितने भी इसमें स्टार है यही जो है मैंडेटरी चीज है, इसी को हम फिल करते होंगे प्रैक्टिस में. Tags क्या है we will see that, but it is optional. I'm leaving it. It's done. Create. It is validating and it's done. I can see Vikas's resource group. Just because I have given it Vikas का नाम इसको मैंने दिया है, that does not mean Vikas got access on this. I will have to go here again, IAM, add roles. I will have to Vikas owner, obviously. Do you guys think you will be able to see Vikas's resource group? What do you guys think about that? I have created Vikas's resource group. He is an owner on this. He can obviously see his resource group. He can create, edit, and do anything now. He has got the access. But do you guys think when you log in, one of you, Abrar bhai, Adnan, Akib, जो भी available है फिलहाल training में, Henty, if you log in, will you be able to see Vikas's group, resource group? No, read level access is not given yet. No, we can't. Anyone who think they will be able to see? I'm I just think talking they about can. see. Yes, you हाँ can. भाई, they can. Yes. Why क्योंकि can सबको you? read only का option है. Right, because I have given you access on subscription Access. level. मैंने subscription level पे आप लोगों को read only access दे रखा है. तो इसके बाद existing groups और जो upcoming groups हो गए, जो भी subscription में बनेंगे, you will be able to see all of them. But you are Yes. owner only on your own resource group. बाकी सब इस पे आप read only access के साथ रहोगे. You can see them and you can access your own resource group. Is it clear? Yes. 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 So this is what a resource group is. This is how you create. Now quickly see how to create a resource group using PowerShell, which was the original question from Irfan. So new easy resource group. It's very simple और बहुत छोटा सा command है. Guys, whoever thinks जिनको PowerShell learn करना है, सीखना है, I'm telling you this with my own experience और दूसरों के experience से भी, you don't have to learn commands. ये command मुझको याद नहीं था, ये मैंने अभी next screen से Google से copy paste किया है. ठीक है, आप लोगों को PowerShell स्क्रिप्ट समझने की जरूरत है. कोई भी कमांड याद नहीं कर सकता है. There are two methods. One is you can take help. आप help टाइप करो और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी. अदरवाइज आप गूगल से कॉपी पेस्ट करो और सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स को एडिट करते रहो.
ठीक है, हेल्प से आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द मोमेंट यू टाइप हेल्प, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी कि किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, कैसे चाहिए। अदरवाइज यू कैन सिंपली गूगल कर दो कि रिसोर्स ग्रुप बनाना है, व्हाट इज द कमांड। सो द कमांड इज न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप, नेम इज एन एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल ग्रुप। तो इसको मैं दे सकता हूँ आर टेस्ट आरजी, टेस्ट आरजी हम बना रहे हैं। नाउ लोकेशन सॉरी गाइस, I just explained कि लोकेशन क्या होता है, not in detail but location. Now at least you know कि ये लोकेशन का मतलब क्या है, कौन से वाले इसकी बात कर रहा है ये लोकेशन। When I say location, this field it is talking about region. Region को यहाँ पर लोकेशन बोल रहा है। That is the reason I wanted to create one first and then share it with you guys. तब इसको हिस्से बनाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों को if you see इसने वेस्ट यूएस दे रखा है, which means यहाँ पर एक वेस्ट यूएस का कोई होगा, डेफिनेटली है, वेस्ट यूएस 2 है, वेस्ट यूएस भी होगा। Central US, you could take anyone. Here it is, West US. So we can change it to East US or we can keep it. वैसे भी हम delete करने वाले हैं, so I'll leave it as it is. So I have just copied it. Let me go back. You can see there's no resource group with this name. यहाँ पर ऐसा कोई resource group है नहीं. These are the resource groups which we have, and I'll simply paste that command here. Hit enter. That's all. It's done. So in many of the interviews also they're asking that can you write PowerShell scripts from the scratch? Yes, why not? This is the one I have written from scratch. Yes. Okay, so as now if they ask us for ये examples गूगल से and all, कहाँ से कॉपी हो रहा है? now वो they एक बार बताओ ना। when they mean by can you write in scratch, they do not literally mean it कि आपको scratch से लिखना है, right? When a wheel has been invented, why would you do that again? आपके पास अगर for them you copy paste भी करना चाहो, scratch से लिखना ही हुआ। What they mean by that question is कि आपको कोई ऐसा तो नहीं चाहिए कि यार स्क्रिप्ट लिख के दो और मैं रन करूंगा। Is that you're looking for? इसके लिए कोई आपको 16, 17, 18 लाख का पैकेज नहीं देगा, राइट? कि मैं आपको स्क्रिप्ट लिख कर दूं और आपको मैं भेज दूं टिकट में, गाइस कुड यू प्लीज गो देयर एंड क्लिक ऑन PowerShell और ये कॉपी पेस्ट करके एक रिसोर्स ग्रुप बना दो। Will someone pay you 16 or 17 लाख का पैकेज for that? No. So when they ask that can you write, उनका मतलब यही होता है कि can you make these changes, कि भाई एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, मे बी एक स्क्रिप्ट ओल्ड स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, एंड now I'm telling you that भाई I need 10 resource groups now. Resource ignore the spelling guys, resource group 1 से लेके 10 ऐसे मेरे पास 10 रिक्वेस्ट है और सबका लोकेशन अलग होगा। एक वेस्ट यूएस में होगा, एक ईस्ट यूएस में होगा, एक सेंट्रल यूएस में होगा, एक इंडिया में होगा, एक चाइना में होगा, एक जर्मनी में होगा, एक यूरोप में होगा। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। सो नाउ by asking can you write it from scratch, this is what they mean, can you do that? So of course you can do this. इसमें एक दो चार गूगल कर लोगे ना, इसमें एक रीच लूप वाला एक कमांड आता है जिसमें आपको यहाँ पर ही एक बार नाम दे देना होता है, 1 to 10 ऐसा नाम देना होता है। इन लोकेशन जो है आप लोगों को एक वैल्यू डिक्लेयर करके वो 10 लोकेशन का ये करना होता है कि कौन कौन से इस पे कौन सा लोकेशन चला जाएगा, कि 1 पे ये लगना चाहिए, सेकंड पे ये लगना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। इतना ही एक कमांड आप लोगों को चलाना होता है, इट विल बी डन। और ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई कॉल सेंटर जैसा नहीं कि कोई किसी ने आपको कॉल कर दिया और कॉल पे अवेलेबल है एंड दे विल से कि राइट डू इट राइट अवे। आपको एक टास्क आएगा, you will have plenty of time to Google on this. So whenever they ask, blindly and confidence के साथ बोलो yes I can do it. You will have time to research and I'm sure with research you guys can do it. नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ग्रुप में पिंग करो कहीं पर भी and you guys will be able to achieve it. What they mean by that question is do you have that understanding? So I'm sure post this course you guys will have this understanding. अगर अभी नहीं भी है तो Yes. because in this course we will cover PowerShell also थोड़ा डिटेल में, हमारे previous batch में हम लोगों ने नहीं किया था। So this is the test resource group we have created, it's done. I will delete this resource group now because we don't require it. We have 1 minute left, we are not continuing because network वाला topic आज हम कर नहीं रहे। Monday I hope to see you guys on Monday. थोड़े ज्यादा लोग आएंगे तो networking करके then we'll start with deployment. ठीक है? सोहेल भाई इसके ट्रायल वर्जन मिल सकते हैं क्या? किस चीज के? जैसे अपने को अभी जैसे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, वर्चुअल मशीन बनाना है, स्टोरेज बनाना है, तो इसका कुछ सैंपल अपने पास है? ये गूगल सारे है, सब कुछ है। Yes, yes, you can create. पर उसका लिंक वगैरह multiple भेज सकते हैं क्या? resource group. क्योंकि Yes, मेरे you को can मिल नहीं create, रहा है वो। Vishal. I'll send one. I'll send one. Do you guys want me to continue next session? कुछ questions है और are we stopping? भाई ये PowerShell का ही है और नहीं, अभी विशाल भाई ने PowerShell बाद में पूछा कुछ। डिटेल में PowerShell बाद में करने वाले हैं हम लोग। ये तो Okay. आज बस हमको टाइम मिल गया इसलिए हम लोगों ने कर लिया। So see you guys on Monday.
And if you guys have any questions, आप लोग group पे ये कर सकते हो. Monday we will start with networking irrespective of the forum. Okay. Okay. Okay guys, bye. Is Okay.